Good morning, children. Welcome back to the social session. And today is 25th of January, children. Tomorrow is 26th January, and you know it very well. 26th January is celebrated as a Republic Day in our country. So today's session we shall discuss about the Republic Day. So first, before I begin, I wish you all a very happy Republic Day, children. India celebrates its Republic Day every year on January 26th. So most of us we get confused, sir, what is this Republic Day and what is Independence Day? So 26th January is actually celebrated as a Republic Day throughout the country, whereas 15th August is celebrated as Independence Day. Independence Day. So what is the difference, basic difference between these two is, this is the day when India's constitution has come into enforcement. Republic Day जो है ये दिन okay constitution लागू हुआ इसका, that means implemented, enforcement day. But whereas 15th August is the day when we have become free from the British rule. ब्रिटिश वाले हमारे को छोड़ के गए थे, ओके हमारा देश को छोड़ के गए थे. दैट इज द डे ऑफ 15th August. आवर सेल्फ रूल वी हैव got from the 15th August, whereas 26th January is our highest law, the land law. Okay, ये धरती का जो highest law है वो constitution है, and that constitution has come into enforcement on 26th January. For that reason we celebrate this year, this day as a Republic Day. So which year this 26th January that constitution has been implemented? It was on 26th January 1950. Since then, okay 1950, okay the constitution has come into enforcement. मगर इंडिपेंडेंस जो है वो 1947 में आया था, मगर रिपब्लिक डे जो है वो 1950 से मनाना शुरू करे. क्यों 1950 से? 1947 से लेके 1950 तक क्या करे सर? फिर बोले तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मेक करे थे. वी हैव मेड अवर कॉन्स्टिट्यूशन. For classes, in classes 8th, 7th and 8th classes, you will learn about the making of the Indian Constitution, where you will understand that in order to make this Constitution, it has taken more than 3 years. It has taken 3 years of time to make our Constitution. So that Constitution which has been prepared under the leadership of Dr. B.R. Ambedkar, जो Constitution का drafting committee था, drafting committee बोले तो उसको लिखने का कमिटी जो है, कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने का कमिटी जो है, एक कमिटी का चेयरमैन जो था वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ही इज अ चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी. ये ड्राफ्टिंग कमिटी कॉन्स्टिट्यूशन बना के किसको देना? इट हैज़ टू बी गिवन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ओके, इट हैज़ टू बी गिवन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज डॉक्टर बाबू राजेंद्र प्रसाद. राजेंद्र प्रसाद जो था, ओके इसका प्रेसिडेंट था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट था, एंड ही इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री आल्सो, राजेंद्र प्रसाद. सो ये कमिटी जो है, इस कमिटी में अंबेडकर के अलावा बहुत सारे लोग भी थे. देर आर मेनी अदर पीपल, ओके के एम मुंशी, गोपाल कृष्ण अयंगर, बहुत सारे लोग हैं. एंड दीज ऑल पीपल सैट टुगेदर एंड दे हैव प्रिपेयर्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, and this constitution was submitted to the constituent assembly on 26th of November, okay 1949. okay, बहुत सारे बाहर के कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़ के हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर करके 26th नवंबर 1949 के दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को हैज अडॉप्टेड इट. दैट मीन इट हैज बीन अप्रूव्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ठीक है, इसको लागू कर सकते बोल के it was adopted on 26th November 1949. 26th November is celebrated every year as a constitutional day. This was the day on which the constitution was adopted by the constituent assembly. So we celebrate 26th November every year as a constitution day. मगर ये जो adopt किए थे, जो constituent assembly adopt करे थे 26th November, okay, it hasn't come into enforcement on the same day. ये अडॉप्ट होने के बाद ऑन 26th जनवरी, अडॉप्ट 26 नवंबर को हुआ, मगर एनफोर्समेंट जो है 26 जनवरी को हुआ. 26 जनवरी 1950 से ओके वी हैव इंप्लीमेंटेड इट, दैट हैज कम इनटू एनफोर्समेंट.
That's the reason we celebrate every year 26th January as a Republic Day. Republic बोले तो क्या है? What do you mean by this word Republic? Already class 8th class children know what is the meaning of the word called as a Republic. Republic बोले तो okay, a country which elects okay its head through the people is called as Republic. बोले तो अगर आप देखें तो हमारा कंट्री का हेड कौन है? प्रेसिडेंट है. प्रेसिडेंट को हमारा लोग ओके इफ द पीपल ऑफ दैट कंट्री elect their head is called as a republic. Whereas you take the countries like ब्रिटेन देखो, ब्रिटेन का हेड कौन है? ब्रिटेन से हेड इज द क्वीन, बट क्वीन इज नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल. क्वीन इज हेरिडिटरीली शी बिकम्स द क्वीन. हेरिडिटरी बोले तो उसके बाद में उसका बच्चे किंग बनता, नहीं तो उसके बच्चे क्वीन किंग बनते, मगर दे आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल. So the difference is there between Britain and India. India's head, the president, is elected indirectly by the people. For that reason, India is a republican country. So this republic means a country which has an elected representative by the people is called as the republic. So happy Republic Day, children. It is our 72nd Republic Day. Hope you understood a small message from the desk. Thank you, children.